प्राचीन काल से ही युद्धपोत प्रतीक रहे शक्ति, विस्तार और प्रतिष्ठा के। सदियों तक युद्धपोत प्रहरी रहे तटीय सीमाओं और वहां बसे बाशिंदों के। समुद्री योद्धा रणनीति के तहत तैनात, आक्रमण कुचलने में सक्षम। भारत की ब्लू वाटर इकोनॉमी और विश्व के आर्थिक इंजन के सारथी। बतौर भारत के गुडविल एम्बेसडर समुद्री सरहदों को तय करते हम हैं भारतीय नौसेना। युद्ध तत्पर, विश्वसनीय, सुगठित और भविष्य के दृढ़ जल प्रहरी। सागर पे नियंत्रण असंभव। नेशन फर्स्ट हमारा संकल्प, शिप्स फर्स्ट हमारा केंद्र बिंदु, हमारा मार्गदर्शक हर समुद्री प्रयास में। फिर अहम समुद्री मार्गों पर प्रभुत्व हो या भारतीय तटों की सुरक्षा, अतिक्रमण से बचाव हो या क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा, युद्धपोत, पनडुब्बियां, विमान, रीढ़ है हमारी युद्ध क्षमताओं की। भारतीय नौसेना एक त्रिआयामीय बल। हमारा समुद्री पराक्रम तैनात है समुद्री तटों पर, अंतरिक्ष में। हम हैं समुद्र में भारत की शमशीर। The Navy is all about fighting and winning wars at sea. हमारे ऑपरेशनल प्लेटफॉर्म्स और उन पर तैनात हमारे पर्सनल इस एस्पेक्ट को संभव बनाते हैं। Equipping, empowering and enabling them has been a primary focus, and simply said, the ship's first approach, which is about reigniting the unrelenting spirit that we imbibe on ships, submarines and aircraft right from our formative years. ये मंत्र ही हमारे सब एक्शंस को गाइडेंस प्रदान करता है। सदैव तत्पर, परिणाम संयुक्त प्रयास का, शिप्स फर्स्ट दृष्टिकोण का। भारतीय नौसेना के लिए पथ प्रदर्शक। पहले जो था उसका करें विस्तार। वर्तमान और भविष्य को दें नया आकार। भारतीय नौसेना एक युद्ध तत्पर, विश्वसनीय, सुगठित और भविष्य के दृढ़ जल प्रहरी। इन
हिंदुस्तान की नौसेना ताकत के मामले में दुनिया के बहुत से देशों से आगे है। भारतीय नौसेना के जहाज समुद्र में दम दिखाते रहे हैं तो नौसेना के लड़ाकू विमान तिरंगे के साथ आसमान में हुंकार भरते नजर आते हैं। समुद्री सरहदों की रक्षा करने वाली हिंदुस्तान की नौसेना देश की फौजी ताकत का बेहद दमदार और अहम हिस्सा है। यह दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर नौसेना है। भारतीय नौसेना का इतिहास गौरवशाली है और सदियों पुराना है। माना जाता है कि भारतीय नौसेना का पहल गठन छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था। हालांकि इसे आगे बढ़ाने का काम अंग्रेजों ने किया। तब से लेकर अब तक भारतीय नौसेना ने तमाम पड़ाव देखे हैं। भारतीय नौसेना का पराक्रम पूरी दुनिया ने देखा है और पूरी दुनिया भारतीय नौसेना की ताकत से भली भांति परिचित है। भारतीय नौसेना की क्षमता का लोहा दुश्मन भी मानता है। बदलते समय के साथ नौसेना ने हर मोर्चे पर अपनी काबिलियत साबित की है। आने वाले वक्त में भी यह देश का गौरव बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका निभाती रहेगी। इतिहास पर नजर डालें तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1612 में नौसेना का गठन किया। 1686 में इसका नाम ईस्ट इंडिया मरीन से बदलकर बॉम्बे मरीन कर दिया गया। 1830 में बॉम्बे मरीन का नाम बदलकर ब्रिटिश महारानी की भारतीय नौसेना किया गया। 1863 से 1877 तक फिर इसका नाम बॉम्बे मरीन रहा। बाद में 1892 में इसे रॉयल इंडियन नेवी का नाम दिया गया। भारत की आजादी के बाद 1950 में इसका नाम बदलकर भारतीय नौसेना कर दिया गया। वीर शिवाजी के जमाने से और अंग्रेजों के शासन तक हिंदुस्तान की नौसेना का योगदान पूरी दुनिया हमेशा याद करती है। पहले और दूसरे विश्व युद्ध में भी भारतीय नौसेना ने अपनी मौजूदगी से पूरे दुनिया को हिला दिया था। वर्ष 2022 में 2 सितंबर को नौसेना का ध्वज बदला गया और भारतीय नौसेना को नई पहचान मिली। नौसेना की ये नई पहचान ब्रिटिश राज के कड़वे अतीत से पहले आजाद भारत की समुद्री विरासत की निशानियों को समेटे हुए है। नौसेना के नए ध्वज में से अंग्रेजों की निशानी क्रॉस का लाल निशान हटा दिया गया। नए ध्वज में उसकी जगह तिरंगे और अशोक चिन्ह ले ली। इसी दिन देश के नए विमान वाहक युद्धपोत विक्रांत को भी नौसेना में शामिल किया गया। यह पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। आजादी के अमृतकाल में भारतीय नौसेना आधुनिकीकरण की डगर पर तेजी से आगे बढ़ रही है और कामयाबी के झंडे गाड़ रही है। आजादी के बाद 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के दौरान नौसेना की ईस्टर्न फ्लीट के शानदार पराक्रम के कारण पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना पड़ा। इसी युद्ध में विजय के जश्न के रूप में हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। इस युद्ध में अपने पराक्रम से भारतीय नौसेना ने विश्व मानचित्र पर अपनी उपस्थिति दर्ज की और अपना लोहा मनवाया। इस युद्ध में भारतीय नौसेना ने पूरे विश्व को दिखाया कि उसकी क्षमता क्या है और वो कैसा दमखम रखती है। पोर्ट ब्लेयर के नौसेना जहाज मरम्मत यार्ड में भारतीय नौसेना के युद्धपोतों आईएनएस चीता, आईएनएस गुलदार और आईएनएस कुंभीर के सेवा मुक्ति समारोह के सजीव प्रसारण में दूरदर्शन आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। हम इस खूबसूरत शाम एक युग के अंत का गवाह बनने जा रहे हैं जब इन 3 युद्धपोतों को अलविदा कहेंगे जिन्होंने राष्ट्र को 4 दशकों तक अपनी सेवा प्रदान की। इन युद्धपोतों पर सेवाएं दे चुके कमांडिंग ऑफिसर्स, नाविकों और जवानों के लिए आज का दिन गौरव और भाव विभोर कर देने वाला है, क्योंकि जिन युद्धपोतों पर उन्होंने देश के सीमाओं, समुद्र क्षेत्र की रक्षा की और देशवासियों की सेवाएं दी, वो कल से सेवारत नहीं होंगी। लेकिन इन युद्धपोतों पर बिताया हुआ हर एक पल, किया गया हर एक ऑपरेशन इन्हें जीवन पर्यंत याद रहेगा। अंडमान और निकोबार कमान भारतीय सशस्त्र बलों की एकमात्र संयुक्त कमान है
जिसमें 4 घटक शामिल हैं: भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और तटरक्षक बल। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 834 द्वीप और 6 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक का विशेष आर्थिक क्षेत्र शामिल है, जो भारत के समग्र विशेष आर्थिक क्षेत्र का लगभग 30% है। अंडमान और निकोबार कमान पूर्व की ओर से भारत की रक्षा का पहला गढ़ है और इसमें 18 जहाजों का एक बेड़ा शामिल है, जिसमें LST-L, LST-M, NOPO, मिसाइल कॉर्वेट, LCU और FSE शामिल हैं। भारतीय नौसेना के युद्धपोतों INS चीता, INS गुलदार और INS कुंभीर के सेवा मुक्त समारोह के सजीव प्रसारण में भारतीय नौसेना बंदरगाह अंडमान निकोबार से मैं दिनेश कुमार सिंह और मैं विंसेंट आप सभी का अभिनंदन करते हैं। Join us with your hearts filled with joy and happiness, with gratitude and respect, for you are about to witness the memory-filled marvels of the sea being decommissioned. For the first time in the history of Indian Navy, 3 warships will be decommissioned on the same day. The names of these mighty warships are INS Cheetah, INS Guldar and INS Kumbhir. सेवा मुक्त समारोह में एयर मार्शल साजू बालाकृष्णन अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायुसेना मेडल, अंडमान और निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ मुख्य अतिथि होंगे और समारोह को सम्माननीय अतिथि के तौर पर शोभायमान करेंगे नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख वाइस एडमिरल तरुण सोभी, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल। The chief guest for today's historical event is Air Marshal Saju Balakrishnan, Ati Vishisht Seva Medal, Vayu Sena Medal, Commander-in-Chief, Andaman and Nicobar Command. And the guest of honor for today's event is Vice Admiral Tarun Sopti, Ati Vishisht Seva Medal, Vishisht Seva Medal, Deputy Chief of Naval Staff. दर्शकों, सेरेमोनियल गार्ड्स ने पद संभाल लिया है क्योंकि फ्लैग ऑफिसर समारोह स्थल पर पहुंच रहे हैं। गार्ड की कमान लेफ्टिनेंट कमांडर नाव्या जी संभाल रही हैं। द्वितीय अधिकारी हैं लेफ्टिनेंट आयुषी देसाई। The ceremonial guard, with its immaculate turnout, sharp and synchronized movements, is a perfect embodiment of the ethos of the Navy. The guard today is being commanded by Lieutenant Commander Navya Ji, officer of the guard, and Lieutenant Ayushi Desai, the officer of the guard too. दर्शकों, हम आपको बता दें कि इस समारोह के सम्माननीय अतिथि नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख वाइस एडमिरल तरुण सोभी, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल समारोह स्थल पर पहुंच चुके हैं और शीघ्र ही इस समारोह में मुख्य अतिथि एयर मार्शल साजू बालाकृष्णन पधारने वाले हैं। आज की ये शाम इतिहास बनेगी उन सभी कमांडिंग ऑफिसर्स के जीवन के लिए, उन नाविकों के लिए, उन जवानों के लिए जिन्होंने इन तीनों ही युद्धपोतों पर अपनी सेवाएं दी। इन युद्धपोतों पर सेवाएं दे चुके कमांडिंग ऑफिसर्स, नाविकों और जवानों के लिए आज का दिन गौरव और भाव विभोर कर देने वाला है, क्योंकि जिन युद्धपोतों पर उन्होंने देश की सीमाओं, समुद्री क्षेत्र की रक्षा की और देशवासियों की सेवाएं दी, वे कल से सेवारत नहीं होंगी। लेकिन इन युद्धपोतों में बिताया हुआ हर एक पल, किया गया हर एक ऑपरेशन इन सब के जीवन में महत्व रखता है और वे जीवन पर्यंत इन्हें याद रखेंगे। काफी संख्या में उपस्थिति, इंतजार आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि का, उनके आगमन के तुरंत पश्चात आज का ये सेवा मुक्त समारोह प्रारंभ होगा।
This is an historical moment when we will witness 3 of our warships being decommissioned. They have served the nation. They have given their best for the nation. The men on these ships have given their life for this nation. This day is an historical day when we will say thank you to these 3 beauties of the sea. दर्शकों, आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि के बारे में हम आपको बता दें। एयर मार्शल साजू बालाकृष्णन अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायुसेना मेडल, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र रहे हैं और 7 जून 1986 को भारतीय वायुसेना की लड़ाकू शाखा में नियुक्त हुए। मुख्य अतिथि का आगमन समारोह स्थल पर हो चुका है। The chief guest has arrived. फ्लैग ऑफिसर्स ने बैंड की धुन पर उनका स्वागत किया। सलामी देते हुए आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि एयर मार्शल साजू बालाकृष्णन को भारतीय नौसेना के जवान, गौरवशाली क्षण इन सभी जवानों के लिए जो साक्षी बन रहे हैं इस क्षण का, जब भारतीय नौसेना के ये 3 युद्धपोत सेवा मुक्त होंगे। समारोह के मुख्य अतिथि एयर मार्शल साजू बालाकृष्णन अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायुसेना मेडल और अंडमान निकोबार कमांडर के कमांडर इन चीफ जवानों से मुलाकात करते हुए आगे बढ़ेंगे मुख्य मंच की ओर, जहां पर उनके पदार्पण के साथ ही कार्यक्रम आरंभ होगा। On your screen, now you can see the chief guest of today's event, Air Marshal Saju Balakrishnan, Ati Vishisht Seva Medal, Vayu Sena Medal, Commander-in-Chief, Andaman and Nicobar Command. मुख्य अतिथि के साथ हैं आज के इस समारोह के सम्माननीय अतिथि वाइस एडमिरल तरुण सोपती, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, उप प्रमुख नौसेना अधिकारी, स्वागत करते हुए आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि का। एक विशेष अनुभव, एक विशेष आभास इन सभी जवानों के लिए जो सदैव तत्पर रहते हैं देश की रक्षा के लिए, देश की सीमाओं की रक्षा के लिए। A special moment for everyone present here. अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायु सेना मेडल, कमांडर इन चीफ, अंडमान एंड निकोबार कमांड, मिसेस लता साजू, प्रेसिडेंट दवा, वाइस एडमिरल तरुण सोपती, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, फ्लैग ऑफिसर्स, ex-crew of Cheetah, Guldar Kumbhir, dignitaries, officers and distinguished guests. On behalf of the Andaman and Nicobar Command and the naval component, I would like to extend a very warm welcome to one and all present here today for the decommissioning ceremony of Indian naval ships Cheetah, Guldar and Kumbhir. Today, as we draw the curtains on the 4 decades of service rendered by these mighty amphibians,
it is imperative that we give them a befitting farewell. In accordance with the finest naval traditions, I would now request Lieutenant Adishesh Mishra, Commanding Officer, INS Guldar, to deliver the welcome address. अब मैं लेफ्टिनेंट आदिशेष मिश्रा, कमान अधिकारी, भारतीय नौसेना पोत गुलदार से वेलकम एड्रेस देने का अनुरोध करता हूं। Commander-in-Chief, Andaman and Nicobar Command, Air Marshal Shaju Balakrishnan, Ati Vishesh Seva Medal, Vayu Sena Medal, Mrs. Lata Shaju, President Dawa, Deputy Chief of Naval Staff, Vice Admiral Tarun Sobti, Ati Vishesh Seva Medal, Vishesh Seva Medal, Flag Officers, distinguished guests, ladies and gentlemen. I am Lieutenant Adishesh Mishra, Commanding Officer, INS Guldar. On behalf of the officers and men of all three ships, Cheetah, Guldar and Kumbhir, I would like to extend heartfelt welcome to each and every one of you to the decommissioning ceremony. At the very outset, I am indeed honored and privileged to have been entrusted with the significant responsibility to deliver this welcome speech and participate in the decommissioning ceremony of these mighty ships who have a 40-year-long history. Serving as a non-specialist commanding officer, this opportunity has been a remarkable learning experience for me, and I am indeed honored to be delivering the speech to you today. We are honored to have amongst us officers and men from the commissioning crew, retired and serving personnel who have taken out time and effort to be present here with us today, with their families, as we come together to mark a significant occasion in the history of Indian Navy, the decommissioning of Indian naval ships Cheetah, Guldar and Kumbhir. Today, as we decommission the LSTMs, we reflect on the countless moments of triumph, shared challenges, and the camaraderie that defined their journey. The memories forged within these steel walls will forever be etched in our hearts, reminding us of the sacrifices made for the safety and security of our nation. For 4 decades, Cheetah, Guldar and Kumbhir This decommissioning ceremony marks the end of an era for this illustrious class of vessel as will be retired from active duty. As we reflect on the significance of this occasion, we are filled with mixed emotions. There is a sense of nostalgia as we remember the countless missions, exercises and deployments that LSTM have undertaken, and the esprit de corps and the bonds that were formed amongst the crew. There is also a sense of pride as we acknowledge the ship's accomplishments in serving our nation with unwavering dedication and valor. LSTMs have played a crucial role in our defense preparedness, collaborating closely with Indian Army in amphibious warfare capabilities and also during disaster relief operations. Their versatility, agility and capability to respond troops, equipment, supplies have been invaluable in supporting our troops in diverse terrain and providing humanitarian aid in times of need. The landing ship tank medium, or as we call them LSTMs, were the first amphibians of the Indian Navy. With long sea legs, large tank space and a bow ramp, these vessels were capable of transporting troops, vehicles and cargo directly to shore. The induction and utility of the ships during crucial naval operations and amphibious exercises such as Operation Restore Hope for UN peacekeeping duties in Somalia, Operation Aman, Tasha and Pavan in Sri Lanka significantly enhanced our expeditionary capabilities, contributing to successful military operations in conflict and humanitarian missions. With the capability to operate in diverse environments, from challenging sea conditions to shallow waters, the ships are highly adaptable. Over 4 decades, these ships participated in numerous naval exercises, peacekeeping missions, and conflicts, witnessing historical milestones and demonstrating dedication and skill of their crews. These ships have a rich history, with their crew demonstrating exceptional professionalism and dedication in every mission undertaken. The officers and sailors have bravely faced challenges, adversities, demonstrating unwavering courage
and commitment to duty. These ships have also truly reflected the Navy's core value of duty, honor, and courage. As we bid farewell to these formidable warships, we express our deepest gratitude to those who have contributed to this illustrious journey, from the officers and sailors who have served on board, to the families who have supported them with unwavering love and understanding. We also acknowledge the hard work and dedication of the shipyard workers, engineers, and support staff who have ensured smooth operation and maintenance of the ship throughout their service. As Indian naval ships Cheetah, Guldar, and Kumbhir are set to be decommissioned in the next few moments, their legacy will endure in the records of Navy's history. The memories of their remarkable achievements, the camaraderie among their crew, and the enduring bonds formed will be cherished forever. Thank you for being a part of this momentous ceremony. Shamnu Varuna, Jai Hind. May I now request our guest of honor, Vice Admiral Tarun Sopti, Deputy Chief of the Naval Staff, to kindly address the gathering. मैं अब हमारे सम्मानित अतिथि वाइस एडमिरल तरुण सोपती, नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख से सभा को संबोधित करने का अनुरोध करता हूं। Air Marshal Saju Balakrishnan, Commander-in-Chief Andaman Nicobar Command, Mrs. Lata Saju, Commanding Officers, erstwhile and present crew of the 3 ships, ladies and gentlemen, it is a proud privilege for me today to be part of this decommissioning ceremony where we bid adieu to the last 3 LSTMs, namely iron ships Cheetah, Guldar, and Kumbhir, and reflect on the nearly 40 remarkable years these vessels have spent serving our nation and Navy. I am indeed grateful to the SINCAN for extending an invitation to me, and I am honored to be amongst the gathering on this solemn and momentous occasion. Solemn because today draws the curtains on the long and splendid service by these 3 ships, and momentous since it is a rare occasion that we gather to celebrate the remarkable journeys through time of 3 ships together. Our hearts swell with pride as throughout their individual decade-long journeys, each crew member has tackled every mission with fortitude and courage. Most significantly, they have consistently met the mandate set before them. These ships, Cheetah, Guldar, and Kumbhir, which are part of the Ghorpat class, originally the Russian Polnochny class, were the first amphibious ships procured by the Indian Navy. The induction of landing ship tank medium vessels in the Indian Navy was a significant enhancement in maritime capabilities, serving a multifaceted purpose. The Andaman and Nicobar Command, which was formerly known as the Fortress Andaman Nicobar, underwent a significant transformation in 1991 when it was rechristened as ANC. This change reflected a broader strategic vision to fortify the capabilities of ANC and emphasized its crucial role in India's maritime security. The unique geographical position of the Andaman and Nicobar Islands also made them a key asset in safeguarding vital sea routes and projecting maritime influence. These vessels, designed for amphibious operations, were deemed essential for enhancing the command's rapid deployment and mobility. The LSTM ships played a pivotal role in transporting troops, vehicles, and cargo directly to the shore, thus ensuring a swift and effective response in the coastal littoral environments of the Andaman and Nicobar Islands. Being the bedrock of strategic mobility and rapid deployment of forces, these ships were indeed the Indian Navy's first ships to beach in foreign waters for the landing of Indian Army troops during IPKF operations in Sri Lanka. Their versatile operational capabilities extend to coastal security missions, thereby allowing effective patrolling in shallow waters. Furthermore, these ships have contributed to joint military operations and collaborated seamlessly with the Army, promoting overall interoperability within the armed forces. It is indeed
essential to mention that these ships also had the rare distinction of being the first Indian naval ships to enter foreign ports during Op Moffitt for the UN-assisted humanitarian assistance aid missions in Somalia, thereby showcasing the nation's commitment to international cooperation in times of crisis. During peacetime and times of adversity, these ships consistently demonstrated resilience. Their involvement in peacekeeping forces showcased our nation's commitment to fostering tranquility, and their efforts in countering threats such as the LTTE underscored the courage and determination of our naval forces. While I have never served on LSTMs, my personal association with this class of ships goes back to my days in the local workup team East between 2010 and 2013, when I conducted workups for some ships of this class. The one thing that never failed to fascinate me was the unique position of the helicopter deck and watching a Cheetah land on them. And I can assure you, at sea, when you do that, it is really a unique experience. As we set our sights on the future and evolution of naval warfare demands that we align with modern requirements. To fulfill the void of their planned replacement in the form of LPD or landing platform dock, the ships which are to be inducted as their replacement will be a significant enhancement to our naval capabilities. These cutting-edge vessels will possess the inherent capacity to undertake out-of-area contingency with their ability to transport and deploy forces ashore, arrive swiftly in designated areas, and sustain operations at sea for extended durations. These LPDs will serve as command centers for the Commander, Amphibious Task Force, Landing Force Commander, and Air Force Commander. Furthermore, these LPDs will also act as motherships for unmanned capabilities, supporting standoff operations and exploiting futuristic autonomous platforms. The strategic transition will ensure that our naval forces remain at the forefront, ready to meet the challenges of tomorrow with a fleet that seamlessly blends tradition with innovation. Today, as we bid adieu to Cheetah, Guldar, and Kumbhir, I express my heartfelt gratitude to everyone present here. I also want to express appreciation for those past crew members who were unable to join us today for a variety of reasons, maybe distance, health. So thank you all for taking the time to be a part of this momentous occasion. Your presence, whether in person or in spirit, adds immense value to the significance of this event, and I deeply appreciate your involvement in cherishing this special moment together. In conclusion, I would like to state that let us not lament their decommissioning, but rather commemorate their significant contribution to our naval strength. May the retirement of these mighty ships mirror the dignity that characterized the illustrious years of service they have rendered. In recognizing that these ships, akin to immortal souls and in the finest traditions of the Indian Navy, will be reincarnated in the form of future ships, their legacy promises to transcend the boundaries of time, ensuring an immortal print on naval history. To these maritime icons, we extend our deepest gratitude. Fair winds and following seas, and may their spirits live forever. Samna Varuna, Jai Hind. Thank you, sir. May I now request our chief guest, Air Marshal Saju Balakrishnan, Commander-in-Chief, Andaman and Nicobar Command, to address us. मैं अब हमारे मुख्य अतिथि एयर मार्शल साजू बालाकृष्णन, कमांडर इन चीफ, अंडमान और निकोबार कमांड से सभा को संबोधित करने का अनुरोध करता हूं। Deputy Chief of Naval Staff, dear veterans, friends from the media, ladies and gentlemen, a very good evening to all of you. At the outset, let me take this opportunity to thank all those officers and sailors who have been on board this ship over its 4 decades of service and who have taken the pains to be with us along with their families. We are greatly indebted for your great gesture in sparing your valuable time and being with us on this momentous occasion.
I know that's a bittersweet moment for you. Bitter because the ship that you have nurtured over the years will cease to exist in its present avatar. And like Deputy Chief said, we all hope that it will reincarnate in a better and more formidable avatar in future to come. Today is indeed a momentous day, not only in the history of Indian Navy, but also for the ANC. Because as we bid adieu to 3 stalwart ships of Cheetah, Guldar Kumbhir, what makes this event more memorable is that I believe this is for the first time that not 1, not 2, but 3 major warships are being decommissioned together. These were amongst the first amphibians to be positioned in Andaman Nicobar Island. They have been a constant companion in the journey of ANC and are leaving behind a rich legacy as has been covered by the CEO and Deputy Chief. They have spent more than 40 years in service, which amounts to about 120 years of cumulative service towards the nation. As recalled by the commissioning crew last night, commissioned at Gdansk shipyard and inducted into the Indian Navy in the mid-80s, they were subsequently relocated in 90s to this particular command. Their operations majorly in the initial stages included tactical missions as part of IPKF in Sri Lanka, proving their utility very early in the stages of commissioning. During the time at ANC, these ships have enhanced maritime security in the region through their long sea legs and amphibious warfare capability. These ships were also amongst the first from ANC to be deployed for coordinated patrols with Thailand and Indonesian navies, thereby effectively building bridges of friendship and acting as ambassadors for the Navy and the nation. In the op logistics role, they also played a key role in regularly transporting troops, vehicles and cargoes within the ANI. Their significant contribution extended beyond routine naval operations, contributing to the overall defense and security of the island territories by their active involvement in all tri-service exercises. They continue to demonstrate their adaptability to diverse environments in the region, ranging from the challenging sea condition to shallow waters close to the shore. A special mention must be also made of the mammoth effort put in by these ships towards HADR efforts during the 2004 tsunami, which greatly impacted ANI. These 3, being the largest at that time of the amphibians, were actively deployed in all remote locations, and support rendered them has been widely recognized and documented. I, on behalf of the entire ANC, would like to pay special compliments to all officers and men who have steered these vessels through the challenges of the service, and express our deepest gratitude for your dedicated service and sacrifices. For all formal crew members unable to join us today, we want you to know that your presence resonates in the shared memories and camaraderie that unite us as a naval family. Each one of you have played a crucial role in the history of these vessels, and your contributions are essential to the story we honor and remember today. Today is also a moment for us to remember and pay tribute to those ex-crew members who are no longer with us. Their contributions, sacrifice and memories will live on as the legacy of these ships. Let us take a moment to honor their service and express our deepest gratitude for their indomitable spirit they brought to the naval family. I would also like to pay tribute to the rich history and legacy of these ships. These ships have been an integral part of Indian Navy and this command in particular, safeguarding our maritime interests, protecting our sovereignty and nation strength projected across the seas. They have served our nation with unwavering dedication, professionalism and commitment to duty.
May their retirement be as serene as the seas they once traversed, and may their memory continue to guide the future generations of naval personnel. Before I conclude, I also want to pay a special compliment to NAVCC, his entire team, and the commanding officer and all personnel of the 3 ships for a brilliantly organized function. And my interaction with the veteran community over the last 2 days have indicated that no efforts were spared in looking after these personnel and making this trip of theirs as memorable as possible. In conclusion, we look forward to see these mighty ships in their second avatar. Fair winds and following seas to their valiant ships. Thank you for your years of devoted service to this great nation. Samono Varna. Jai Hind. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, may I draw your attention towards the ships being decommissioned. The white pennant flowing through the length of the ship is the paying off pennant, which is hoisted during colors on the Sunday preceding the decommissioning day. During the ceremony, this pennant will be lowered with due solemnity, marking the culmination of the ship's active duty. It encapsulates the ship's legacy and contributions to the nation's maritime endeavors, serving as a visual representation of the ship's honorable service. देवियों और सज्जनों, जैसा कि आप देख रहे हैं, जहाज की लंबाई के माध्यम से बहने वाला सफेद पेनेंट पेइंग ऑफ पेनेंट कहलाता है, जिसे सेवा मुक्त होने के दिन से पिछले रविवार को कलर सेरेमनी के दौरान फहराया जाता है। समारोह के दौरान जहाज की एक्टिव ड्यूटी की परिणति को चिन्हित करते हुए इस ध्वज को उतारा जाएगा। यह जहाज की विरासत और देश की समुद्री प्रयासों में योगदान को दिखाता है, जो जहाज की सम्मानजनक सेवा का एक दृश्य है। Ladies and gentlemen, you will now see the Sunset Guard as it marches in to take post on the gun deck, where the naval ensign would be brought down one last time. देवियों और सज्जनों, अब आप सनसेट गार्ड को देखेंगे, जो कि गन डेक पर पोस्ट लेने के लिए आगे बढ़ेगा, जहां नौसेना के चिन्ह को आखिरी बार नीचे लाया जाएगा। It gives us immense honor to inform you that together, the ships have collectively spent 12,344 days at sea, covering a distance of 17,85,000 nautical miles. Collectively, these 3 ships have also undertaken 1,300 beaching operations over the years, thereby proving their role worthiness as reliable amphibious platforms. आपको यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इन जहाजों ने समुद्र में 12,344 दिन बिताए हैं, जिस दौरान समुद्र में 17,85,000 समुद्री मील की दूरी तय की गई है। सामूहिक रूप से इन 3 जहाजों ने इन वर्षों में 1,300 बीचिंग ऑपरेशंस किए हैं, जिससे एम्फीबियस प्लेटफॉर्म्स के रूप में उनकी भूमिका योग्यता साबित हुई है। Time and again, these platforms have not only showcased the extended outreach and resilience of the naval component, but also the capability to provide immediate succor to civil populace during peace
as well as in emergency situations. इन प्लेटफॉर्मों ने न केवल कंपोनेंट की विस्तारित पहुंच दिखाई है, बल्कि शांति के साथ साथ आपातकालीन स्थितियों में नागरिक आबादी को तत्काल सहायता प्रदान करने की क्षमता भी दिखाई है। Ladies and gentlemen, in a few minutes from now, we will witness the solemn ceremony of lowering of the naval ensign. This is the last time during the lifetime of these ships that this ceremony will be performed on board. देवियों और सज्जनों, अब से कुछ ही मिनटों में हम नौसेना के चिन्ह को नीचे उतारने के पवित्र समारोह के साक्षी बनेंगे। इन जहाजों के जीवन में यह आखिरी बार है कि यह समारोह जहाज पर किया जाएगा। May I now request the commanding officers of Cheetah, Guldar and Kumbhir to embark their respective ships for lowering of the naval ensign at sunset. मैं अब कमान अधिकारी चीता, गुलदार और कुंभीर से अनुरोध करता हूं कि वे सूर्यास्त के समय नौसेना के चिन्ह को उतारने के लिए अपने अपने जहाजों की ओर प्रस्थान करें। Ladies and gentlemen, command at sea is considered to be the pinnacle of one's naval career. Holding a sea command requires thorough professionalism, unflinching commitment, unwavering dedication to service ethos, and decisiveness in action. Men who have commanded at sea invariably possess hearts of steel and minds sharper than swords. We are fortunate to visually experience the legacy of these ships in the form of their commanding officers of yesteryears. We have amongst us today 32 former commanding officers of these resplendent platforms. देवियों और सज्जनों, पोत की कमान हर नौसैनिक के करियर का शिखर माना जाता है। इसे संभालने के लिए व्यावसायिकता, अविचल प्रतिबद्धता, सेवा लोकाचार के प्रति अटूट समर्पण और कार्रवाई में निर्णायकता की आवश्यकता होती है। समुद्र में आज्ञा देने वाले इन लोगों के पास हमेशा लोहे के दिल और तलवारों से तेज दिमाग होते हैं। हम भाग्यशाली हैं कि हमें इन जहाजों की विरासत को उनके कमान अधिकारियों के रूप में देखने का मौका मिला। आज हमारे बीच इन शानदार युद्ध पोतों के 32 पूर्व कमान अधिकारी हैं। May I now request the former commanding officers present here to embark their respective ships for the sunset ceremony. अब मैं यहां मौजूद पूर्व कमान अधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि वे सूर्यास्त समारोह के लिए अपने अपने जहाजों की ओर प्रस्थान करें। The naval component is responsible for the defense of Andaman and Nicobar group of islands and the adjoining seas thereof. The naval component comprises of ships, aircraft, shore establishments, including air stations and various allied units across the Andaman and Nicobar Islands. The naval component has two base depot ships, INS Jarava and INS Kardeep, and 3 air stations, INS Utkrosh, INS Baz,
and INS Kohasa. The component is given stellar support by Material Organization, Naval Ship Repair Yard, INHS Dhanvantri, Base Victualling Organization, and other allied naval units. The naval component has grown in strength in the past few years and has been operating in close liaison with sister components of Andaman and Nicobar Command, that is, Indian Army, Indian Air Force, and Coast Guard component, in the true spirit of jointmanship. By virtue of the operational philosophy of the LSTs, these amphibious ships operate in close liaison and synergy with the Indian Army for undertaking troop lift and amphibious operations, thereby fostering the true sense of joint operations in letter and spirit. नेवल कंपोनेंट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और उसके आसपास के समुद्रों की रक्षा के लिए जिम्मेदार है। नेवल कंपोनेंट में जहाज़ों, विमान, हवाई स्टेशनों सहित तट प्रतिष्ठान और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में विभिन्न एलाइड यूनिट्स भी शामिल हैं। नेवल कंपोनेंट में 2 बेस डिपो आईएनएस जरावा और आईएनएस कारदीप एवं 3 एयर स्टेशन आईएनएस उत्कृष्ट, आईएनएस बाज और आईएनएस कोहासा हैं। नेवल कंपोनेंट को मटेरियल ऑर्गेनाइजेशन, नेवल शिप रिपेयर यार्ड, इंडियन नेवल हॉस्पिटल शिप धनवंतरी, बेस विक्चुअलिंग ऑर्गेनाइजेशन और अन्य एलाइड नेवल यूनिट्स का साथ है। पिछले कुछ वर्षों में नेवल कंपोनेंट की ताकत में वृद्धि हुई है। नेवल कंपोनेंट अंडमान और निकोबार कमान के सहयोगी कंपोनेंट अर्थात इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड के साथ संयुक्त कौशल की सच्ची भावना के साथ निकट संपर्क में काम कर रहा है। एलएसटी जहाज इंडियन आर्मी के साथ निकट संपर्क और तालमेल में काम करते हैं ताकि सैनिक परिवहन और एम्फिबियस ऑपरेशंस हो सकें, जिससे जॉइंट ऑपरेशंस की सही भावना को अक्षरशः बढ़ावा मिलता है। The Andaman and Nicobar Command is the only tri-services command of the Indian Armed Forces. The ANC, in its present avatar, was incepted in 2001, replacing the erstwhile Fortran known as Fortress Andaman. Over the years, the command has witnessed significant transformations in terms of assets, infrastructure, and capabilities commensurate to the fledgling interest of the nation. अंडमान और निकोबार कमान भारतीय सशस्त्र बलों की एकमात्र त्रिसेवा कमांड है। अपने वर्तमान अवतार में एएनसी की स्थापना 2001 में फोर्ट्रेस अंडमान यानी कि फोर्ट्रैन के नाम से की गई थी। पिछले कुछ वर्षों में कमान ने राष्ट्र के उभरते हितों के अनुरूप संपत्ति, बुनियादी ढांचे और क्षमताओं के मामले में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे हैं। I now request our chief guest, Air Marshal Saju Balakrishnan, our guest of honor, Vice Admiral Tarun Sobti, and Chief of Staff, Rear Admiral Sandeep Singh Sandhu, to proceed to the ceremonial dais for the decommissioning ceremony. In a short while from now, we will witness the solemn moment of the decommissioning ceremony, that is, the lowering of the naval ensign. All personnel in uniform are requested to salute with the commencement of the first note of sunset and cut the salute on the order of Bagal Shastru by the officer of the Sunset Guard. Ladies and gentlemen, you are now requested to rise for sunset ceremony and continue to remain standing until both the naval ensign and the paying of pennant have been lowered.
देवियों और सज्जनों, अब आपसे अनुरोध है कि सूर्यास्त समारोह के लिए उठें और तब तक खड़े रहें जब तक कि नौसेना के चिन्ह और पेइंग ऑफ पेनेंट दोनों को नहीं उतारा जाता। The naval ensign will now be folded and placed in the ensign box. The lowered ensign will now be handed over to the respective commanding officers. नौसेना के चिन्ह को अब तय करके एनसाइन बॉक्स में रखा जाएगा। उतारे हुए चिन्ह को अब कमान अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा। The last post will now be sounded by the buglers as the paying of pennant is being lowered. I would request all of you to please continue to stand at attention while the paying of pennant is being lowered. You are not required to salute and may sit down after the lowering.
Ladies and gentlemen, as you can see to your right and left, the ensign box is being carried by representatives from the Indian Army, Indian Navy and Indian Air Force and will be placed in front of the flag offices. The commanding officers will now make the final report of decommissioning of their respective ships to the chief guest, guest of honor and chief of staff. कमान अधिकारी अब जहाज को सेवा मुक्त करने की अंतिम रिपोर्ट मुख्य अतिथि, सम्मानित अतिथि एवं चीफ ऑफ स्टाफ को बनाएंगे। Decommission Shriman! बहुत अच्छे। May I now kindly request the flag officers to take their seats. Ladies and gentlemen, I would like to draw your attention to your right, where we have an indigenous advanced light helicopter approaching from the horizon for a fly past to bid final farewell to the decommissioned ships. The ALH of INS 325 based at INS Utkrosh is being commanded by Commander Ayush. This graceful fly past marks the culmination of this decommissioning ceremony. देवियों और सज्जनों, मैं आपका ध्यान आपके दाहिने ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जहां हमारे पास एक इंडिजिनस एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है जो सेवा मुक्त जहाजों को अंतिम विदाई देने के लिए फ्लाई पास्ट करता आ रहा है। आईएनएस उत्कृष्ट में स्थित INAS 325 के ALH की कमान कमांडर आयुष द्वारा संभाली जा रही है। यह फ्लाई पास्ट इस डीकमिशनिंग सेरेमनी के अंत को चिन्हित करता है।
May I now request Air Marshal Saju Balakrishnan, Vice Admiral Tarun Sopti and Rear Admiral Sandeep Singh Sandhu to proceed towards INS Kumbhir for photography. When the sun goes down, it marks the closing of the day. But that day goes down, teaching us in it ours. Decommissioning is with number of years of service, but memories are immortal. These warships have served the nation at sea, vigilant even when the waves hit them hard. These warships have rendered 4 decades of unflagging service to the nation. We are witnessing a new chapter in the history book of the Indian Navy. This is the moment most cherished. With tears of happiness in our eyes, it's time to say these mighty marvels of the sea, thank you. Their path of course will now be the navigation for the young ships and also for our brave men at sea. What you see on your screen are not just ships. These are memories of years of command at sea. These ships gave us back home to sleep in peace, for they were at sea to protect us. The men who served on these marvels are soldiers with heart of steel. Adieu, INS Cheetah, Guldar and Kumbhir. भारतीय नौसेना के इन युद्धपोतों का सेवा मुक्त होना गौरवशाली 4 दशकों का अंत है। देश की सुरक्षा और देशवासियों के लिए इन युद्धपोतों द्वारा दी गई सेवाएं आज इतिहास के पन्नों में सदैव के लिए अमर हो गईं। इन युद्धपोतों द्वारा दी गई सेवाओं को देश गौरव के साथ याद करेगा। आने वाली पीढ़ियों को इनकी सेवाएं प्रेरित करती रहेंगी। सेवा मुक्त होने के साथ ये तीनों युद्धपोत भारतीय नौसेना के इतिहास में अमर हो गए। यह क्षण है गौरव भाव, हर्षित मन और नम आँखों से इन प्रहरियों को विदा करने का। परिवर्तन समय की मांग है। पुराना जाएगा, नया आएगा, लेकिन जाते जाते पुरानी चीज़ नए आने वाले को सीख देकर एक नया पथ प्रदर्शित कर जाती है। ये तीनों युद्धपोत INS चीता, INS गुलदार और INS कुंभीर भारतीयों और भारतीय नौसेना के लिए सदैव गौरव और प्रेरणा का स्रोत रहेंगे।